Friends, welcome in the second part of the video, which is on physical features of India. फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया कि कैसे इंडिया डिफरेंट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से होता हुआ आज की प्रेजेंट फॉर्म तक पहुंचा है और जो हम फिजिकल लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं उसी प्रोसेस का रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, इंडिया की फिजियोग्राफी को हम 5 मेजर फिजिकल यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ नर्दर्न माउंटेन और हिमालय, सेकंड northern plains, third peninsular plateau, fourth western and eastern coastal plains, fifth the island Andaman and Nicobar and Lakshadweep. Let us start with the first physical unit, that is northern Himalaya और northern mountains. फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, द हिमालय विच इज़ द जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हमारे देश इंडिया के नर्दर्न बॉर्डर में वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है, विच इज़ फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर. The Himalaya represent the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world और यह एक आर्क शेप फॉर्म करता है। हिमालय की लेंथ वेस्ट टू ईस्ट लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी विड्थ 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक वेरी करती है। कश्मीर में इसकी विड्थ ज़्यादा है और अरुणाचल में आप देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर हम ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात करें, मींस हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल और समुद्र तल से ऊंचाई की, तो आप देखेंगे कि ईस्टर्न पार्ट में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस ज़्यादा हैं एज़ कंपैरिजन टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। फ्रेंड्स, हिमालयन रेंज को हम वेस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ रिवर वैली बेस्ड डिविजन्स, राइट। द फर्स्ट वन इज़ कश्मीर हिमालयाज, जो कि यहाँ इंडस रिवर तक फैला हुआ है। Here the average height is around 3000 meter and this section has the largest share of snow and glaciers. In Pir Panjal ranges there are two passes, Banihal and Pir Panjal. These ranges are breached by Kishanganga, Jhelum and Chenab. Friends, the valley of Kashmir lies in this section. Then Punjab Himalayas, which is from Indus River to Satluj River. Friends, high peaks are rare here. This section has bare, rugged northern slopes with plateaus having lakes such as Mansarovar and Raks, and the forested southern slopes. In this section, important passes are Jozila, Rohtang, and Baralacha. And beside that, there are few valleys which includes Kangra, Lahaul and Spiti, right? And this section is important from the point of view of horticulture and scenic beauty. Then Kumaon Himalayas. This section extends from Satluj to Kali River valleys and is said to have 360 lakes such as Nainital and Bhimtal. The pilgrimage centers Badrinath, Gangotri are located in this section and are particular importance to Hindus. Then Central or Nepal Himalayas. This section extends from Kali to Tista and has the distinction of having some of the highest peaks in the world, including Mount Everest. This section is further divided into Sikkim, Darjeeling, and Bhutan Himalayas. Then Assam Himalayas. This section extends from Tista River to Brahmaputra River. Pondri and Kula Kangri are the noted peaks. Naga and the Patkai Boom hills of this section form the watershed between India and Myanmar. अब हम क्रॉस सेक्शन व्यू में अगर देखें तो हिमालय को ब्रॉडली 4 डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, ग्रेटर हिमालय, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय और हिमाद्री. सेकंड, लेसर हिमालय. थर्ड, सब हिमालय or also known as Shivalik Himalayas, and fourth one is Trans Himalayas. Greater Himalayas. The average breadth of these ranges varies from 120 km to 190 kilometers.
and the average height is 6,000 meters. These ranges are composed of Archean rocks like granites, gneiss, and schists. Friends, these ranges have the highest mountain peaks in the world. Beside that, Burzil Pass and Zozila in Kashmir, Shipkila and Baralacha in Himachal Pradesh, Thangla, Niti Pass and Lipu Lake in Uttarakhand, Zelbla and Nathula in Sikkim are the important passes. Friends, the Indus form the deepest gorge in India when it penetrates through the Himalaya near Nanga Parbat. Then Lesser Himalayas, which is also known as the Himachal Ranges. This section has an average breadth of 60 to 80 kilometers, an average height of 3,500 meters to 5,000 meters, and comprises mainly metamorphic and unfossiliferous sedimentary rocks. Important ranges include Pir Panjal, Dhauladhar, Nag Tibba, Mussoorie Ranges, and Mahabharat Range, which is in Nepal. Most of the hill stations lies in this section. These hill stations include Shimla, Mussoorie, Nainital, Almora, Ranikhet, Chakrata, Chail, etc. The northern slopes are thickly forested, while the southern slopes are bare and rugged. Then sub-Himalayas, which is also known as Shivaliks, have an average breadth between 15 to 50 kilometers and an average height between 1000 to 1500 meters. Right? These ranges are mainly made up of fluvial deposits, sand, clay, gravels, slates, etc. Right? This section is characterized by poor drainage, much pronounced in the Tarai region. Then Trans Himalayas. This section comprises ranges Karakoram, Ladakh, Kailash, Hindu Kush, Hindu Raj, Kunlun, Tanshan, Pamir, Ale, and Trans Ale, which coverage on central promontory of Pamir. Gasher Brahm 1, Gasher Brahm 2, Broad Peak, Naga Parbat, Mount K2, which is also known as Godwin Austin, Rakaposhi, and Haramosh are important peaks, right? And this section has some of the world's largest glaciers: Siachen, Hisper and Batura, Baifo and Baltoro, right? सो आई होप आपको हिमालयन माउंटेन रेंज की फ़िज़िकल सेटिंग्स अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। तो चलिए इस पिक्चर से आप थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें कि देखिए यह सबसे ऊंचा जो हाइट पर है इट इज़ ग्रेट हिमालय, और इसके साउथ में लेसर हिमालय, फिर उसके फुटेल्स में दून वैलीज़, और फिर शिवालिक, देन स्टार्ट गंगा प्लेन्स, राइट। अब आप ग्रेट हिमालय की दूसरी तरफ यानी चाइना की तरफ को नॉर्थवर्ड देखेंगे तो लद्दाख रेंज, देन सांगपो वैली जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, देन कैलाश माउंटेन रेंज, और उसके बाद आता है टिप्टन प्लेट्यूज। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज आर माउंट एवरेस्ट 8,848 meters, कंचनजंगा 8,598, मकालू 8,481, धौलगिरी 8,172, नागा पर्वत 8,126, अन्नपूर्णा 8,078, नंदा देवी 7,817, कामेट 7,756, नामचा बरवा 7,756, and many other mountains are there in Himalayan range. चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज़ की। हिमालय की इम्पोर्टेंस क्या है? द फर्स्ट, हिमालयाज़ आर द मेन सोर्स ऑफ द नर्दर्न इंडियन रिवर्स। ये हमें न केवल ड्रिंकिंग वाटर बल्कि हमारे फर्टाइल नर्दर्न प्लेन्स को पंजाब से लेकर असम तक इरीगेट करता है। सेकेंड, हिमालयाज़ आर द मेजर सोर्स ऑफ द हाइडल पावर। नंबर ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर देयर जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। थ्री, हिमालयन रिवर्स वेदरिंग एंड इरोजन से अपने साथ बहुत सी फर्टाइल सॉइल लेकर आती है जो कि प्लेन्स में जा कर के डिपॉजिट करती है
जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल है और वेरी फर्टाइल। 4. The Himalayas also have a profound influence on the subcontinental climate. हिमालय हमें नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड से बचाता है और इन्हें रोक लेता है। इसके अलावा इंडियन मानसून विंड्स के लिए भी हिमालय ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिससे कि प्रेसिपिटेशन मेनली इंडियन लैंड मास में होती है। और अगर हिमालय ना हो तो विंड्स जो हैं, ये जो मानसून विंड्स हैं, फर्दर नॉर्थवर्ड मूव कर जाती और इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो आज है तो कुछ और होती, राइट। नेक्स्ट, द हिमालय आर द होम टू अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। इसके अलावा हिमालयाज कंटेन रिच रिजर्व्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज, राइट। बिसाइड दैट, हिमालयाज हैव अ ग्रेट पोटेंशियल एज अ टूरिस्ट सेंटर। यहाँ पर लाखों लोग विजिट करते हैं और कुछ ऐसी लोकेशंस भी हैं जो पूरी तरह से अभी एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड press subscribe button and bell icon for more videos. Thank you. Thanks a lot.